वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोडिंग विद स्वप्निल। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल पाइथन ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। Also, we will install one IDE to execute our Python program. IDE and Python install करने के बाद हम एक एक प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे for the confirmation is the Python install on our Windows system or not. So let's move towards the installation part. सबसे पहले आपको ओपन करना है आपका कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे टाइप करना है py। जैसे ही आप py एंड एंटर करोगे यू विल सी नो इंस्टॉल पाइथन फाउंड। मे बी इन आवर केस आपको कुछ नहीं दिखेगा या ब्लैंक दिखेगा, सो दैट डजंट मैटर। इफ इट शोइंग पाइथन एंड एनी वर्जन 3.12 और समथिंग, दैट मीन्स कि पाइथन आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऑलरेडी इंस्टॉल है। सो चलिए अब जाते हैं हम हमारे गूगल बाबा के पास। यहाँ पर हम सर्च करेंगे पाइथन डाउनलोड। डोंट वरी, आई विल शेयर दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आप सीधा वहां से रिडायरेक्ट कर सकते हो यहाँ एंड डाउनलोड कर सकते हो पाइथन 3.12.7। सो जैसे ही आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे आपके पास एक .exe फाइल डाउनलोड होगी आपके ब्राउजर में। मैंने ऑलरेडी कर रखी है। सो आई विल गो इनटू द डाउनलोड सेक्शन पाइथन 3.13। सो आई विल क्लिक ऑन इट। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मुझे दो ऑप्शंस चेक करनी है यहाँ पे। एक तो यूज एडमिन एंड ऐड पाथ, ऐड python.exe to path. This is most important guys while installing Python. Need to click on customize installation. Optional features आपको as it is रखने हैं। Just click on next. यहाँ पर आपको इंस्टॉल पाइथन 3.13 फॉर ऑल यूजर्स चेक करना ही करना है। Why? The reason is whenever you will create any new user for in future, आपको पाइथन मैन्युअली इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर यूजर के लिए जो आपने क्रिएट किया है। अगर आप ये चेकबॉक्स ट्रू रखते हैं तो, दैट मीन्स टिक रखते हैं तो। As we don't want to install Python manually for every user, then we'll click on install, then we'll click on yes. It will take us some time, so as of now I am skipping the video. Congratulations guys, we have Python on your Windows operating system now. As you can see, setup was successful message. तो अभी हम इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करेंगे एंड विल चेक कि पाइथन सच में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। सो यू नीड टू अगेन visit your command prompt. In command prompt you will type py and enter. जैसे ही आप एंटर करोगे आपको दिखेगा पाइथन 3.13 एंड समथिंग। दैट मीन्स कि आपने ये वाला पाइथन का वर्जन आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, नाउ वी कैन एक्सिक्यूट एनी प्रोग्राम, एनी पाइथन प्रोग्राम ऑन आवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। So as of now we will run one program, that is obviously print hello world. Then we'll click on enter. So boom, you can see hello world as output on the command prompt. That means we have successfully installed Python on our Windows operating system. Also दोस्तों हमने इनिशियली एक बात की थी IDLE, दैट मीन्स एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर जहां पर हम हमारे पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। We have installed that as well while installing Python. So to visit the
Ideally, you need to search the ideally in your search bar. Ideally. You can see ideally. Once you will open the ideally, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जो कि एक टिपिकल टेक्स्ट एडिटर का है। यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जस्ट टू सी कि हमारा पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है हमारे आइडियली। सो अगेन विल यूज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, hit enter. Okay guys, this is also showing output on the output window like hello world by using print statement. प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। हाउ पाइथन एग्जीक्यूट द कोड by using binary code, we already explained that in the last video. So guys, हमने पाइथन सक्सेसफुली हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया है। गोइंग फॉरवर्ड हम यही आईडीएलई को यूज करेंगे हमारे पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। So if you also want to learn Python from basics to advanced, please do subscribe us and hit the bell icon so that you will get the every latest update about our video. So till then, goodbye guys, happy coding.